See, it is on the left side. It is the source via from there. Remember, if the cow, if the animal is healthy, then the milk secreted by the udder is sterile. Sterile means free of microorganisms. But once it comes out of, so many microorganisms gain entry into the milk. And you see these are the various sources, and the biggest source is teat. Teat से ही microorganism इस मिल्क में चले जाते हैं. In addition to teat, you will see the environment, the water, the milking machine, the tank, and all these microorganisms, all these things which we use in the farm preps. These become the source of. So these microorganisms gain entry into this. Then, once in milk, they play a very, very important role in milk. I will just summarize. I will just put it. Then we'll put it in a little bit of detail. What they do, they facilitate dairy fermentation. If you ever want to become an entrepreneur, you may not like to sell the milk as such, because as you see, the market of raw milk is very less. But we have to do the fermentation. We have to do the processing. Suppose if we have to make the yogurt, we have to do the fermentation. We have to make cheese. We have to do the fermentation. And so many microorganisms which are present in the milk naturally come from the environment. They do these things. So they are industrially important. So whatever microorganisms are naturally present in the raw milk, they are industrially important. There are some names, if you wish you can read them. Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus, they do fermentation. Then they cause spoilage. If we have to run the business, we have to be aware of all these microorganisms which cause spoilage. And there are particularly those microorganisms which can withstand low temperature. We call them psychrophilic bacteria. These are the importance of psychrophilic bacteria present is more because once we collect milk, we immediately freeze it, we immediately refrigerate it. And this refrigeration gives a selective advantage to certain group of microorganisms, while disadvantage to others. Others microorganisms don't do, but these microorganisms which are health promoting, they don't create, and you know the lactobacillus or that you call it, what we call it, probiotics. They promote our health. Not only that, we have certain concerns because nowadays we are bothered about antimicrobial resistance. Two things happen in milk. Number one, there are resident microbiota, normal microorganisms, which are resistant to so many antibiotics. That's one concern. Number two, if we give antibiotic to the animal, this antibiotic finds its way into the milk. If we don't follow the strict withdrawal time period, then there is possibility that this will find its way into the human beings. And again, add to antimicrobial resistance. Sorry. So, this is what is the source of milk, what is the source of microorganisms. They go into the milk, and you see I have enlisted. They are technologically important. You see, then you see they produce health promotion, means what we call them probiotics, or they cause spoilage, or they cause disease. Okay, then if we move, if we see the composition of bacteria, microorganisms, two groups are very important. One group you just now said, psychotroph, because they are more important when we put this milk in refrigeration, and we normally do that. But before that, one important group which is very important there, those are called lactic acid bacteria. These bacteria convert lactose present in the milk into lactic acid, and this lactic acid results in the production of so many fermented products. And since we have a wide range of lactic acid bacteria, and different microorganisms produce different mechanisms of this fermentation, and they will definitely add to the organoleptic properties of the food. कैसा taste, कैसा flavor, कैसा aroma, कैसा ये feel,
all these attributes. So there are people who like a particular aroma, a particular. So that character goes with this lactobacillus. So as an agent, they are involved in making yogurt, milk, cheese, cultured butter. So these microorganisms come from the milk itself. Remember this. Another group which I said you is that psychrophyll. One important organism is Pseudomonas or Acinetobacter. I told you when we put it in the refrigeration, these microorganisms they have a selective advantage. Their number increases more than others, and sometimes their number, when we see the total microbiota of the milk, their number constitutes even 90% of total. यानी 90% तो यही होते हैं. And when these are there, they grow at 0 to 7 degrees. They produce certain enzymes, lipases. जब लिपिड तो है ही मिल्क में, जब लाइपेस उस पर एक्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा? रैंसिडिटी. और रैंसिडिटी का क्या इम्पैक्ट है? They produce certain proteases. They act on the protein and they produce off flavors, bitter taste. दूध पीते ही लगता है यार बड़ा अजीब सा फ्लेवर है, ये ठीक नहीं है. That is also because of non-microbial mechanisms भी है. But what I mean to say that microbes are also incriminated in such kind of issues. Then I told you what is the source of this milk microorganism. I told you that healthy animal produces citral, but later on they keep on adding from the environment. What is the main source? Main source is teat. Then the people have done studies on this teat and they have found a very diverse microbiota on the teat itself of a cow on different locations. Or this here, if we see at phylum level, we have phylum, we have family, we have genus, order level, and then species level. We are not talking of these lower levels. We simply talk of upper level. You see Firmicutes, Actinobacteria, Protobacteria, Bacteroides, and you see the first level. And many of these are technologically important. And we can use them for fermentation. मैं diversity बता रहा हूँ. What is the diversity and what is their relative number? Like Lactobacillus, Leuconostoid, Enterococcus, they are technologically important. They are involved in flavor, aroma, color development in cheese. Probably that may be important for an entrepreneurship. Such as coagulase negative Staphylococcus, Orthobacter, and these are some names which have been found to be involved in cheese. So remember, whatever we use, they come directly from the milk itself. Then the implementation of strict hygiene. We always insist that once we produce milk, we have to maintain hygiene. Do we? Because of so many reasons. Number first, we should not, these pathogen microorganisms should not gain entry into the milk. Number two, if the total count of the milk goes down, then the keeping quality of the milk increases. So we are always insisting on hygiene. But we must remember one thing. Once we do hygiene, then the number of these microorganisms, all of them are not harmful. Some of them are beneficial. We are reducing the number of beneficial organisms also. It has been seen over a period of 15 years when they have done the study at the same place. They have seen one magnitude it has reduced. Important organisms which are important from technological point of view. One magnitude. One magnitude means if previously it was 10 raised to power 4, now it is 10 raised to power 3. So we are insisting on the implementation of strict hygiene, but at the same time it reduces the population of beneficial microorganisms. This may not be important to you or to others because we normally take milk after pasteurization, and pasteurization otherwise kills these microorganisms. But there are a good number of people who use raw milk in their home setting. That is called that is called a traditional, artisanal approach they use. They know how I have to take the milk as raw and how I have to manage it,
and use the microorganisms present in the milk itself to produce a product with a particular aroma. Probably a house lady will be knowing it better. But if we adopt strict hygiene, then this kind of possibility we lose it. So here we have to deliberately add what? Starter culture, wherein we know a particular aroma or a particular quality of the product is because of this particular organism. Isolate that organism, have that culture in our lab, maintain strict, and do all other then selectively at that particular micro. That is what industrially people are doing. जो डच में है, डैनिशी है ना ज़्यादा, they maintain a way, and you know ये जो we have a microbial culture collection center, ATCC, American type culture collection center. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बेचते हैं. आपको पता है उनको ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता है? ज़्यादा पैसा उनको मिलता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से. क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये स्टार्टर कल्चर जो उनके पास होता है, या तो उसमें कंटामिनेशन हो जाती है, या तो वो म्यूटेट होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उसको लूज करते हैं. देन दे हैव टू रिवर्ट बैक टू दिस ATCC, अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर. दे हैव टू go to and ask for the same. So what I mean to say is that there are some high quality dairy products produced all over the world, and that high quality dairy product is not the character of milk, that is the character of microorganism which convert that. And the quality and the credit goes to the microorganism, not the milk. So कोई किसी ने घर में ही ये सीखा है, उसको ये पता नहीं है कि कौन सा microorganism is involved, but they know what are the appropriate conditions which I should give it to the milk so to produce that particular quality of, है ना? जैसे we know in other foods also. Some people can prepare biryani very nice, some people cannot. So those who know, they know the combination of all these ingredients which we should put in this so that we get this product. Another thing is, this is the microbial composition. ये कंपोजिशन मैंने क्यों बोला, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मिल्क में माइक्रोऑर्गेनिज्म कितने ज़्यादा होते हैं. You can just tell, if we talk of lactic acid producing bacteria population, दो ही ग्रुप दिए हैं यहाँ पर, बाकी ज़्यादा नहीं दिए. डाइवर्सिटी बहुत ह्यूज है, सिर्फ दो बड़े ग्रुप को हमने लिया, मीन्स पार्टिकल्स. आप इसको लेमैन में बोलो कितने माइक्रोऑर्गेनिज्म के पार्टिकल पर, अगर आप टेरेस और 4 हायर एंड पर जाए, मीन्स 10,000 10,000 particles of one particular organism. इसी तरह दूसरे के भी कुछ 10,000, तीसरे के 1,000, चौथे के 1,000, 10,000, 1,000. तो मान लो ऑलमोस्ट अगर हम एक ही स्पीशीज को ले लें, ये 10-20,000 4 ml. 1 ml मिल्क हम रॉ मिल्क लेते हैं. आई एम टॉकिंग ऑफ रॉ मिल्क बिकॉज द सिनेरियो विल चेंज व्हेन वी सब्जेक्ट इट टू प्रोसेसिंग, ईदर कूलिंग और yes. Then a number of other microorganisms can be present in significant, can be present. That depends upon the treatment. Suppose ये जो साइक्रोफिलिक साइक्रोट्रॉफस है, they are pseudomonas, acinetobacter, aeromonas, which flourish in cold storage. तो अगर हमने इसको cold storage किया तो scenario change होगा. But one thing is very important which I want to emphasize, that a good number of microorganisms are present in that milk. यहाँ पर ये देखा, you see they are the species. ये नाम है, जिस तरह हमारे नाम है इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम है. तो उनका रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है, काऊ में, शीप में, बफलो में, ह्यूमन में क्या है. और आप समझते हो यहाँ पर जब काऊ में देखा गया, वहाँ CD और NGS ये टेक्नोलॉजी. हमारे पास दो तरीके हैं ऑर्गेनिज्म का देखने. एक है कल्चर डिपेंडेंट, हम ऑर्गेनिज्म को लाते हैं, उसको खाना पीना देते हैं और वो ग्रो करता है. तो लेकिन देखा गया कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में है, उसमें 5% से भी कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका खाना पीना हम दे सकते हैं और उनको ग्रो कर सकते हैं. मीन्स व्हेन वी रिजॉर्ट टू कल्चर डिपेंडेंट identification, we only account for 5% of the microorganism. There are 95% of organisms for which we don't know how to culture them. Once we don't know how to culture them, how can we identify them? So we have a limitation when we go resort to culture dependent identification.
For that, we have a technological way out. What is that? That's called NGS, next generation sequencing. When we go for sequencing based, then we account for those microorganisms also which we cannot grow, because we simply get the DNA and then sequence them and then see what is their number. And that's why the proportion changes. For the same animal, when we go with the culture dependent and NGS, next generation sequencing. All what I want to emphasize here, you see the diversity. You see that I told you, a human being is a healthy human being if one gets infected with a diverse type of microorganism during birth. So we have to avoid all those things wherein that diversity is compromised. That means we should resort to normal way of delivery. If we have to go for the cesarean, then it's better to induce the labor pain and then go for the cesarean. Then we have to go for the breastfeeding. If we cannot do the breastfeeding, then we are minimizing that. Then then the baby gets only those microorganisms which are present on the skin of the mother. These microorganisms definitely play a role. Then we will not be surprised if that baby has a suicidal tendencies in the future life. Then we see impact of cold storage. Milk is typically stored at refrigeration temperature. That reduces the growth of most of the organisms, with exception to, of course, psychrophilic, because they are tolerant microorganisms and become a major source of milk supply. Major source of milk supply. Primary as a consequence of production of extracellular lipase. I told you why they become super. They produce lipase. They produce certain enzymes. And these enzymes act on the chemicals. When they act on the chemicals, the byproduct is not of good taste. So bitter taste of the SKIIE उसमें आ जाती है. They have seen seasonal variation. ये भी एक स्टडी किया गया. उन्होंने देखा जो समर का मिल्क है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है, और जो विंटर का मिल्क है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है. ये भी काम किसका है? इन्हीं माइक्रो. आई वांट टू एम्फसाइज द रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग. सीडोमोनास स्पीशीज द मोस्ट कॉमन. जैसे मैंने बताया, अगर आप देखा गया तो अगर हम रेफ्रिजरेशन में रखेंगे तो सीडोमोनास की तादाद ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इट कैन गो अप टू 90%. The impact of pasteurization. When we do pasteurization, we do it for two reasons. That is to remove those microorganisms which will spoil them, and then to remove those microorganisms which will be pathogenic later. So for these two reasons, we subject it a particular temperature for a particular period of time, and that is pasteurization. But at the same time, we don't exclude the possibility of producing the microorganisms as well. But we have to see, because there is a group of bacteria which can withstand this temperature, that are called thermodynamic bacteria. Then there are certain bacteria which may not withstand this temperature, but bacteria, these are the microorganisms which can be pathogenic to consumer. And this pasteurization ensures that these microorganisms are killed. Leaving two main groups, जैसे मैंने दो ग्रुप आपको बताए हैं. Then there is a thermodynamic bacteria. What happens? There is a thermodynamic bacteria, particularly spore-forming organisms. Once they are in the pasteurized milk, they grow. When they grow, some of you must, who are from the microbiology, they must be knowing that these spore-forming, they are producing gas. When they produce gas, when we make cheese like this, then there are certain pores within this cheese. It is kind of a spillage, which we called blowing defect, which is particularly associated with Clostridium tyrobacterium. Clostridium is a spore-forming microorganism. Since it is spore-forming, it can withstand pasteurization, and once we make this kind of paneer later on, then we may suffer this kind of spillage. This is the defect which occurs, and this leads to off flavor and textural defect. पनीर में फ्लेवर भी गड़बड़ हो जाता है और टेक्सचर भी इसका उड़ जाता है. Other spore-forming bacteria, for example, Bacillus cereus is also a spore-forming bacteria. When it goes, it also causes curdling, और ये इसको खराब करता है, इसकी टेक्सचर को खराब करता है. Not only that, you know that Bacillus cereus is also pathogenic. It causes food poisoning. अगर ये ग्रो किया, एक तो उसने दूध खराब किया, फिर उस पर अगर उसने टॉक्सिन डाला, this toxin is resistant to heat tolerant. और अगर हमने ये food खाया, we suffer from food poisoning. So Bacillus cereus also causes food poisoning. Another thing is, we have another group of microorganisms, those are called phage. You know what are phage?
These are those viruses which grow on other cells. But bacteriophages are those viruses which grow only on bacteria. So we have a lot many phages. They are important, they are not important. They are not important in the sense because these phages act on so many organisms. Then they do act on which organisms? Which are very beneficial to the to technology. So they act on lactobacillus, Stereothermophilus, and has been associated with causing delay or disruption in fermentation. हमने स्टार्टर डाला, ये काम ही नहीं कर रहा है, हमें पता नहीं है कि इसमें फॉज भी आ गया है और फॉज स्पेसिफिकली इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर एक्ट करता है. तो हमारा टेक्नोलॉजिकली जो प्रोडक्ट ये हमने स्टार्टर कल्चर डाला वो काम नहीं कर रहा है. नॉट ओनली दैट, while the phage concentration is higher in raw, जब हम इसको पॉस्चराइजेशन करते हैं तो पॉस्चराइजेशन phage मर जाती है, but they are all certain phages which have been found to be tolerant. They will stand. And then these phages then specifically act on starter culture. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो डेयरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो इसलिए क्या करते हैं, we need to have a system to identify phages in the setup. Dairy setup में phage डिटेक्ट करने का सिस्टम होना चाहिए. तो phage डिटेक्ट करने के माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स भी हैं और लेटेस्ट आज है रियल टाइम पीसीआर और पीसीआर. तो हमारे लैब में पीसीआर और रियल टाइम पीसीआर भी होना चाहिए ये देखने के लिए कि ये phage है कि नहीं. दो चीज़ें मैंने बताई. One, I told you that if we want to get the starter culture, we can get it from it. That is not a problem, but that's a very high cost. We cannot afford to get it regularly. So once we get the starter culture, if we have a particular phage, unfortunately, which attacks the starter culture, then the starter culture may not work. Okay, na? So this is the bad part. So food industry में आदमी था, उसका दिमाग फिर गया जब उसका कल्चर बार बार खराब हो रहा था. Then he thought, okay, ये कैसे हो रहा है. जब उसने इस पर ध्यान दिया तब जाके उसने CRISPR कैस टेक्नोलॉजी का एरिया. मेरी बात समझे. तो कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री से है और इसका सोर्स कहीं ना कहीं इसी कल्चर से, स्टार्टर कल्चर से है जो उसको बार बार खराब करता है. What I want to emphasize here that phage is an organism which you cannot ignore in the produce, which act on other microorganisms, but they don't act on the same micro. So there are a lot many microorganisms, they produce these bacteriocins and they inhibit the growth of other microbes. So don't you think it is a natural biopreservation? ठीक है ना. ये नेचुरल बायोप्रोसेस इतना एक इम्पॉर्टेंट है कि एक निकाला गया लैक्टोबैसिलस से जिसको बोलते हैं नाइसिन, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी नेचुरल बायोप्रोसेस. हम फूड प्रोसेसिंग में प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं ना, और प्रिजर्वेटिव का बहुत बड़ा मसला है. There's a lot of problem because the number of preservatives or coloring agents which you can add to the food धीरे धीरे कम होता जाता है. जब भी किसी एजेंट को देखा गया प्रिजर्वेटिव या कलरिंग एजेंट को कि यार ये कुछ पैथोजेनिक है, कुछ टॉक्सिजेनिक है, कार्सिजेनिक है या कोई पोटेंशियल ही है, तो वो बोलते हैं बड़ा फिलहाल बंद कर. सो द चॉइस इज, बट इफ वी हैव अ natural biopreservative, natural food preservative, then this is the one which has been widely used. तो इसी तरह ये प्रोड्यूस करते हैं एसिड. जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, दे प्रोड्यूस एसिड. एसिड itself is not favorable for growth of health. So the very nature of producing acid is a biopreservative. They produce hydrogen peroxide. आपने देखा होगा कभी कभी हम जख्म पर भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड. They produce highly reactive oxygen species by which they kill the other organisms. Once they produce hydrogen peroxide, so these are certain characteristics which have been seen present in the milk which act as biopreservative. और एक को तो commercially used जिसको नाइसिन हम बोलते हैं, that have been isolated from. Okay, इसी तरह phage भी है. Then मैं कुछ के नाम बताऊँ क्योंकि ह्यूमन डिजीज का मसला है तो इसलिए मैं नाम आपको पता होना चाहिए.
If pathogenic microorganisms are not removed by pasteurization, then the consumption of milk will cause disease. तो अगर किसी ने रॉ मिल्क खाया तो डिजीज होने का चांस है। तो ये आते कहाँ से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म? मैंने आपको बताया कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें भी डिजीज करते हैं, कुछ लाइक माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस है, लिस्टीरिया, बहुत सारे डिजीज है जो हमें भी डिजीज करते हैं, उनको भी डिजीज करते हैं। और बहुत सारे डिजीज एनिमल जब होते हैं तो दे सीक्रेट दिस ऑर्गेनिज्म थ्रू वेरियस saliva, feces, urine, and they also secreted through milk. If it goes through that, बहुत कॉमन रीजन है किसमें? मिल्क में। नॉर्मली क्या होता है, आई विल टेल यू अ वेरी स्टोरी, ये आपको थोड़ा आइडिया आएगा। इफ यू सी माई ऑर्गन इन माई बॉडी, these staphylococcus organs are located at certain places: inguinal region, axillary region, inguinal region, in my nostrils. They are there, and they have the capacity to produce the toxin. तो क्या होता है, नोज पिकिंग का आदत होता है ना, तो इफ आई एम हैंडलिंग मिल्क, तो इसमें मैंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा किया, आई एम हैंडलिंग मिल्क, आई एम पुटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू मिल्क, ठीक है ना। तो मिल्क पर, सिंस आई टोल्ड यू मिल्क इज अ रिच सोर्स, they grow there with the proper environment give, they grow there. Once they grow there, they produce toxin. That toxin is heat resistant. That toxin is heat resistant. तो फिर इस मिल्क को अगर हमने बॉयल भी किया, घर में बॉयल करते हैं ना, बॉयल करने के बाद इसकी दही बनाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर गया लेकिन टॉक्सिन उधर ही रहा। और अगर उस दही को मैं किसी ने पिया तो फूड पॉइजन। इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इन्फेक्शन को होते होते 1 या 2 दिन लगते हैं, फूड पॉइजनिंग आवर्स का काम है। अभी मैंने लंच किया और शाम के 4 बजे 5 बजे वोमिशन, डायरिया, फीवर, पेल पड़ना, घर चक्कर आना, ऑल दीज सिम्टम्स स्टार्ट। इफ दे स्टार्ट वेरी इमीडिएटली, इट इज द कॉज ऑफ, because of toxins which we call food poisoning. And this milk is a rich source. So many cases must be happening in valley all over, and probably we may not be knowing. So staphylococcus aureus can be transported milk through the teat canal, equipment, environment or human handling. मैंने human handling की एग्जांपल दी है, इसी तरह staphylococcus aureus teat में भी होती है। They can be transferred and cause illness through the production of heat stable enterotoxin. मैंने बोला ना, ये टॉक्सिन हीट से मरता नहीं है। सिमिलरली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है, बोविस गाय में करता है ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमें, और हमें बोविस भी करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर गाय में ट्यूबरकुलोसिस हो गई तो वो ट्यूबरकुलोस पार्टिकल किस में आ जाते हैं? मिल्क में। और अगर हमने पॉस्चराइजेशन नहीं किया, क्योंकि पॉस्चराइजेशन इसको मार देता है, अगर हमने पॉस्चराइजेशन नहीं किया और कहीं किसी रीजन से हमने रॉ मिल्क खाया, तो अभी मैं बोलूँगा अगर हमने रॉ मिल्क खाया तो डिजीज़ होगा, फिर मैं बोलूँगा अगर हमने रॉ मिल्क नहीं खाया तो डिजीज़ होगा। अब समझे ना, मैं दोनों बातें बोलूँगा। कोलाइट है, ये बाहर से, मेजर कॉज ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये बाहर से आता है। So these are some names. I will not bore you by naming them, but I mean to say that there are a good number of pathogen microorganisms which can find their way into the milk and then into the human host if we consume the raw milk. Then I tell you health promoting. तो मैं हेल्थ प्रमोटिंग एक तो है ही, कौन, जिसको आप बोलते हैं फॉर मिलीनिया इट हैज बीन सजेस्टेड दैट फर्मेंटेड मिल्क कैन क्योर सम डिजीज। मानते या दूध पियो तो सब डिजीज ठीक हो जाएगी। नॉट ओनली दैट, बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स हाईलाइट द यूज ऑफ मिल्क ट्रीट बॉडी। राशंस हैं, एलिमेंट, आपको पता है ये नोबेल लॉरेट इम्यूनोलॉजी में बड़ा काम है, मैक्रोफिजियोलॉजी नहीं दिखाया, नोबेल लॉरेट एलिमेंट का पॉइंट आउट दैट द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग डाइट ऑफ फर्मेंटेड मिल्क। उसने बोला बल्गेरिया में कुछ लोग हैं जो बीमारी नहीं होती, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसने बोल दिया भाई ओनली वो दही लेते हैं, दही लेने का काम। सो यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ हेल्प दे डू। तो ऑब्वियसली वो दही जो हम घर में पकाते हैं, बनाते हैं, तो अच्छा अगर वो रॉ मिल्क से बनता है तो दैन डाइवर्सिटी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म विल बी मोर, इट मे बी मोर बेनिफिशियल, दे हैव मोर एडवांटेज, बट एट द सेम टाइम वी आर रनिंग द रिस्क तो जिन माइक्रोऑर्गेनिज्म फाइंड इट्स वे, सो वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस इन बिटवीन टू।
कोई दोनों चीज़ें में लिमिटेशंस है, दोनों चीज़ें में बेनिफिट्स भी है. अब नाउ वी हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस. हेल्थ प्रमोटिंग बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम दीज. अच्छा, बेवरेज सिस्टम बॉडी में चल रहा है, तो उसी सिस्टम में एक एंजाइम होता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन को उसमें कन्वर्ट करता है ताकि ये ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं. तो दैट इज व्हाई वी समटाइम्स यूज एस इनहिबिटर्स एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. हम बोलते हैं कि ये इसको इनएक्टिवेट हो जाए, वो इसको काटे ना. तो देखा गया so many microorganisms in this dahi keep on producing those proteins which act as ACE inhibitors. तो अब हमें एंटी टेंशन की दवाई खाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी दही में मौजूद है. So many microorganisms present in the milk. It has been exploited to the extent that at least 2 companies have come out. One is Calpis, food industry, Japan. Another is Evolus, that is Finland. They have exploited an organism that is called Lactobacillus helveticus probably. इनमें से एक ऑर्गेनिज्म उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है और इस तरह का उन्होंने फूड बनाया है, मिल्क बनाया है, जिसको आप फंक्शनल फूड कहते हैं. फंक्शनल फूड क्या होता है? एक ऐसा फूड जो नेचुरल न्यूट्रिएंट के अलावा अदर हेल्थ बेनिफिट्स देगा. ये तो न्यूट्रिशन देता ही देता है, साथ में एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स देता है कि ये हाइपरटेंशन को रोक देता है. रॉ मिल्क एंड रॉ मिल्क माइक्रो प्रोडक्ट टू एलिवेट एलर्जी. बहुत पहले से पता है कि अगर काउ मिल्क, बहुत सारे लोग काउ मिल्क के एलर्जिक होते हैं, बच्चे है ना. दे से 25% of the children below 3 years of age are presence of link between farm living including consumption of raw milk. Again I am telling you one place the consumption of raw milk may be hazardous to your health, but at this rate there is a link between farm living including the consumption of raw milk and raw milk microorganism and protection against development of asthma and atopy later on. अगर कश्मीर की बात करें, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, एलर्जी के केसेस बहुत आ रहे हैं. पता नहीं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर हुई है. पुराने ज़माने में इतने एलर्जी नहीं है. एटॉपी एंड एलर्जी इज लॉट, पर्टिकुलरली आजमा. मेरे फैमिली में भी बहुत सफ़र कर रही है, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई फॉरेन सेटिंग में गाँव में रहा है और उसने बाई चांस कोई रॉ मिल्क, सो दे आर नॉट प्रोन टू दिस आजमा एंड, ठीक है ना. तो कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये चीज़ होती है, कभी कभी हम बोलेंगे कि पीना चाहिए. एक्चुअली नेचर गेम खेलता है, फिर जो फिट बैठता है, जिसका लक काम करता है, वो सर्वाइव करता है. एंड प्रोबेबली द होल गेम रिवॉल्व्स अराउंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच.